हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम लर्निंग एकेडमी। आज हम लोग अपनी वर्कशीट नंबर 14 करेंगे जो कि आपकी क्लास 8 साइंस की है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। इन टुडेज वर्कशीट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन and we will segregate different types of metals on the basis of their reactivity with the other elements. So we have learned that metals are of two types, which are very reactive and are less reactive on the basis of their reactivity. Now we will learn about the reactivity of metals with the help of displacement reaction. For this, let us start with an activity. In this activity, we will take 5 beakers and put materials like as it is mentioned in the blue box. In beaker A, we will put copper sulfate solution. तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपका जो होता है वो ब्लूइश कलर का होता है और उसके अंदर हमें क्या डालना है, ब्लूइश ग्रीन होता है। उसके अंदर हमें डालना है जिंक ग्रैनुअल। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक्चर में बीकर ए में। नेक्स्ट आपको बीकर बी लेना है, उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है और उसके साथ आयरन नील। इन बीकर सी वी विल पुट जिंक सल्फेट एंड कॉपर टर्निंग्स। कॉपर टर्निंग्स बच्चों आपके कॉपर की पतली पतली फाइलिंग्स टाइप होती हैं, तो उसको हम कॉपर टर्निंग्स कहते हैं। बीकर डी जो है आपका ये वाला है और बीकर ई में आपका क्या डाला है, जिंक सल्फेट एंड आयरन नील। इन सभी बीकर में हमने 100 ml सोल्यूशन लिए हैं। इन सभी सोल्यूशन को 100 ml लिया है और उसको मार्क कर दिया ABCD और उसमें 50 ml वाटर डाला है हर एक बीकर में और हमने उसको कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया है स्टेबल कंडीशन में अनडिस्टर्ब। और हम कुछ देर बाद अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करते हैं। तो वी विल गेट द ऑब्जर्वेशंस एज बिलो। फर्स्ट, इन बीकर ए जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो जो जिंक है जब वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक मोर रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा। तो इस समय क्या पता लगता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। So as you can see in this reaction, copper sulfate when added to zinc, it will form zinc sulfate and copper will be displaced. Similarly in beaker B, copper sulfate and iron sulfate is formed and copper will be displaced. So on the basis of these reactions, we can see that zinc is more reactive than iron and iron is more reactive than copper. Also, on the other hand, we can see that in beakers C, D and E, these three beakers, there are no change, and you can see in the other two beakers there is change of color of the solution as the reaction have taken place. अब इन तीनों में रिएक्शन क्यों नहीं हुआ आइए देखते हैं। उसका रीज़न है आपका कि मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal from the solution. So therefore no displacement reaction will take place in beaker C, D and E. So हम conclude कर सकते हैं इस activity से कि the more reactive metal displace less reactive metal from their compounds in aqueous solution. So hence we can say that zinc is more reactive than iron and iron is more reactive than copper. Now let's start with the question answers. Question number 1 is asking what is the color of copper sulfate and copper. So the color of copper sulfate is green, greenish solution, and copper is brown. Question 2, why the copper cannot displace zinc from its solution. So the answer is we cannot display copper from zinc from its salt solution because a less reactive metal cannot displace a more reactive metal. So more reactive metal can displace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal. So we can see that copper is less reactive than
zinc. So zinc is more reactive than copper. In question number 3, they are asking you to arrange these three in the order of decreasing order. तो decreasing order का मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा. तो ये order है आपका. So the answer number 3 is this. Question number 4 states that what happens when iron nail is placed in copper sulfate solution. So when iron nail is placed in copper sulfate solution, you will notice that copper is displaced and iron sulfate is formed. So you will write the reaction in beaker B. Last question they are asking, complete the reaction. So what you will add here so that you will get zinc sulfate and copper. So here it should be copper sulfate, CuSO4. So this was your worksheet number 14. I hope you like the explanation of the worksheet. If you have any doubt, you can ask freely in the comment section. Please like, share and subscribe my channel and click on the bell icon. Thank you.